गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, सो वेलकम टू द प्रीलिम्स बूस्टर सेशन। आज का पहला टॉपिक है इंडियाज़ G20 प्रेसिडेंसी। तो आपको पता है कि इंडिया पहली बार G20 की प्रेसिडेंसी अज्यूम करने लगा है 2023 में। तो उसके लिए इंडिया जो है, हमारी यूनियन कैबिनेट ने जो है पूरी तैयारियां शुरू कर ली हैं। तो G20 सेक्रेटरीट ये एक ज़रूरत होती है बनाना, जो भी प्रेसिडेंसी अज्यूम करता है G20 की। तो इंडिया जो है वो G20 का प्रेसिडेंट बनेगा 1 दिसंबर 2022 से लेकर 30 नवंबर 2023 तक। तो अब ये पहली बार इंडिया में G20 की समिट हो रही है। 2008 से समिट्स होती हैं ये, और ये पहली बार इंडिया में कंडक्ट की जा रही है। तो G20 आपको पता है एक प्रीमियर फोरम है जिसमें इंटरनेशनल इकोनॉमिक कोऑपरेशन की बातें की जाती हैं, पॉलिटिकल बातें भी की जाती हैं। तो अब इसमें 20 टॉप की कंट्रीज़, 19 कंट्रीज़ हैं और एक EU अलग से स्पेशल रिप्रेजेंटेशन है उसका। तो ये जो है आपस में कोऑर्डिनेशन के लिए ये समिट्स की जाती हैं। तो अब जो है G20 सेक्रेटरीट इसलिए बनाया जाता है कि जो भी आपकी G20 से रिलेटेड प्रेपरेशंस हैं, नॉलेज कंटेंट या मीडिया को हैंडल करना, जो भी लॉजिस्टिकल एस्पेक्ट्स होते हैं उस कंट्री की प्रेसिडेंसी के लिए इम्पॉर्टेंट, वो सब हैंडल G20 सेक्रेटरीट ही करता है। तो अब इंडिया जो G20 सेक्रेटरीट बना रहा है, इसके अंदर मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस और बाकी मिनिस्ट्रीज़ या डिपार्टमेंट्स के जो हैं वो एक्सपर्ट्स, ऑफिसर्स और स्टाफ होगा, जो कि आपका ये सेक्रेटरीट जो है ये आपका फरवरी 2024 तक फंक्शनल रहने वाला है। इस सेक्रेटरीट को गाइड करने के लिए एक एपेक्स कमेटी भी बनाई जा रही है, जिसको प्राइम मिनिस्टर खुद हेड करेंगे। और इसमें फाइनेंस मिनिस्टर, होम मिनिस्टर, एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर, G20 शेरपा जो होते हैं वो, और फिर जो है बाकी मिनिस्ट्रीज़ भी इसके अंदर पार्टिसिपेट करेंगी। अब एक कोऑर्डिनेशन कमेटी भी बनाई जा रही है जो कि G20 की पूरी प्रिपरेशन करेगी कि इंडिया में G20 जो है समिट अच्छे से की जा सके। लॉन्ग टर्म कैपेसिटी बिल्डिंग का काम करेगी G20 सेक्रेटरीट, नॉलेज जनरेट करेगी, रिसर्च एक्सपर्टीज़ करेगी, कैसे इंडिया अपनी व्यू जो है वो ग्लोबल इश्यूज़ पे जो है वो मल्टीलेटरल फोरा जो है आपका G20 उसमें सामने रख सकता है। ये सारा काम G20 सेक्रेटरीट करेगा। G20 आपको पता है वर्ल्ड की 20 लीडिंग इंडस्ट्रियलाइज्ड एंड इमर्जिंग इकोनॉमीज़ का एक फोरम है, जिसमें 19 कंट्रीज़ हैं इंक्लूडिंग इंडिया, और एक अलग से यूरोपियन यूनियन की जो है वो पार्टिसिपेशन होती है, जिसलिए हम इसको G20 बोलते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं जो कि है वर्कशॉप ऑन मरीन पोल्यूशन। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, गवर्नमेंट ऑफ ऑस्ट्रेलिया और गवर्नमेंट ऑफ सिंगापुर ने मिलकर एक इंटरनेशनल वर्कशॉप कंडक्ट की है, जिसमें मरीन पोल्यूशन को कॉम्बैट करने के लिए जो है वो डिस्कशन की गई है। तो इसमें वर्ल्ड के लीडिंग एक्सपर्ट्स, साइंटिस्ट, गवर्नमेंट ऑफिशियल्स, इन सब ने पार्टिसिपेट किया कि क्या क्या रिसर्च करनी चाहिए, कैसे हम मॉनिटर कर सकते हैं, मरीन लिटरिंग को हम कैसे जो है वो कॉम्बैट कर सकते हैं। इसमें पैनल डिस्कशंस किए गए, ब्रेकआउट सेशंस हुए, और ये देखा गया कि ईस्ट एशिया समिट में जो है इस बारे में डिस्कशन की जानी चाहिए और उन कंट्रीज़ को भी पार्टिसिपेट करने को कहा गया है। ठीक है, अब हम देखते हैं ईस्ट एशिया समिट के बारे में भी थोड़ा सा देख लेते हैं। तो ईस्ट एशिया समिट जो है वो सबसे पहली बार ये आइडिया 1991 में मलेशिया के प्राइम मिनिस्टर जो थे उस टाइम पर, महाथिर बिन मोहम्मद, उन्होंने दिया था। तो 2005 में इस ईस्ट एशिया समिट को कंडक्ट कराना शुरू किया गया। तो ये एक लीडर ओनली फोरम है, मतलब इसमें सिर्फ लीडर्स जो होते हैं कंट्रीज़ के वही पार्टिसिपेट करते हैं। तो 10 एशियन कंट्रीज़ जो हैं वो इसकी मेंबर्स हैं। फिर इंडिया, चाइना, जापान, साउथ कोरिया, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, USA और रशिया इसके पार्टिसिपेंट्स हैं। लेकिन जो फोरम है उसको लीड सिर्फ एशियन कंट्रीज़ ही करती हैं, और इसकी जो चेयरमैनशिप होती है, जो चेयर पोजीशन होती है, वो सिर्फ एशियन मेंबर स्टेट्स के बीच में ही जो है वो एनुअली रोटेट होती है। बाकी जो इंडिया, चाइना, जापान ये सब जो है ये इसके चेयर पोजीशन पे नहीं आ सकते। इंडिया वन ऑफ द फाउंडिंग मेंबर्स था ईस्ट एशिया समिट का। ठीक है, सो नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं जो कि है मेदाराम यात्रा 2022। तो यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स ने 2.26 करोड़ रुपीस सैंक्शन किए हैं कि मेदाराम यात्रा जो है 2022 की उसको कंडक्ट किया जा सके। तो अब इसके अंदर मेदाराम यात्रा से रिलेटेड जो है उसके ट्राइबल कल्चर, हेरिटेज जो है उसको प्रमोट करने के लिए फंड्स का इस्तेमाल किया जाएगा। ये मेदाराम यात्रा कौन कंडक्ट करता है? तो कोया ट्राइब है तेलंगाना की, वो इसको हर साल 2 बार जो है वो कंडक्ट करते हैं, बाई एनुअली, मतलब 2 साल इसको कंडक्ट किया जाता है, हर साल में 2 बार। तो ये बिगेस्ट ट्राइबल फेस्टिवल है एशिया का, और कहा जाता है कि कुंभ के बाद जो है, कुंभ मेला के बाद सबसे ज़्यादा जो है इसी में ही गैदरिंग होती है। तो इस साल ये 16 to 19 फरवरी जो है ये कंडक्ट किया जा रहा है, और इसको जयशंकर भूपालपल्ली डिस्ट्रिक्ट से
में कंडक्ट किया जाता है। और जो है समक्का, ट्विन गॉडेसेस समक्का और उनकी डॉटर सरक्का को जो है वो ऑनर किया जाता है, ठीक है। तो अब इसकी स्टोरी भी एक छोटी सी पीछे से है कि जब काकटिया रूलर्स जो थे 12th सेंचुरी में, उन्होंने ट्राइबल पीपल के ऊपर टैक्स लगा दिया था। तो उन्हें ट्राइबल्स ने रिवोल्ट किया था। तो उस रिवोल्ट को जो है लीड करने वाले समक्का जी और सारारामा जी ही थे। तो मदर डॉटर दुओ इन्होंने आगे उसको जो है वो लीड किया था इस रिवोल्ट को। तो इसीलिए जो है उनको ऑनर पे किया जाता है। और जो ये पूरी कांग्रीगेशन होती है जब भी मेधाराम यात्रा की, तो इसमें 50% जो है वो नॉन आदिवासीज़ भी पार्टिसिपेट करते हैं। ज़रूरी नहीं है सिर्फ ट्राइबल पार्टिसिपेशन होता है, नॉन आदिवासीज़ भी इसके अंदर पार्टिसिपेट करते हैं। तो बहुत से लोग मध्य प्रदेश से लेके उड़ीसा, झारखंड, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश, यहाँ यहाँ से जो है वो इसमें पार्टिसिपेट करने के लिए आते हैं। तो इसकी जो है इसकी सिग्निफिकेंस को देखते हुए इस यात्रा को जो है वो स्टेट फेस्टिवल भी डिक्लेयर किया गया था 1996 में। उस टाइम पे आंध्र प्रदेश होता था, तेलंगाना नहीं होता था, तो आंध्र प्रदेश की गवर्नमेंट ने उस टाइम पर इसको स्टेट फेस्टिवल भी डिक्लेयर किया था, ठीक है। तो नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं जो कि है लासा फीवर। तो जो 3 लोग जिनको लासा फीवर डिटेक्ट हुआ था यूके में, उनमें से एक की डेथ हो गई है। अब ये केसेस जो हैं वो तीनों वेस्ट अफ्रीकन कंट्रीज़ लिंक्ड टू में ट्रैवल किए हुए लोगों में ही पाए गए हैं। तो लासा फीवर क्या होता है? तो ये वेस्ट अफ्रीका में जो है सबसे पहली बार देखा गया था 1969 में। लासा जो है वो नाइजीरिया में पड़ता है, वहाँ पर ये फीवर सबसे पहली बार देखा गया था। कहा जाता है कि ये रैट्स से स्प्रेड होता है। तो वेस्ट अफ्रीका की बहुत सारी कंट्रीज, सियरा लियोनी, लाइबेरिया, गिनी, नाइजीरिया, यहाँ यहाँ पर ये एंडेमिक हो चुका है। मतलब बहुत ज़्यादा इसकी प्रेवलेंस है और अभी ये एंडेमिक हो चुका है। तो ये कैसे फैलता है? तो ये फैलता ऐसे है कि जब कभी आपके घर के खाने में, हाउस होल्ड आइटम्स ऑफ फूड में कभी यूरिन या फिर फीसिस ऑफ इन्फेक्टेड रैट अगर आ जाए और आप उसको कंज्यूम कर लो, तो ये आपको हो सकता है। और ये पर्सन अगर इससे कांटेक्ट में आ जाए, और ये ह्यूमन टू ह्यूमन ट्रांसमिशन कैसे होता है? अगर कोई सिक पर्सन के का बॉडी फ्लूइड जो है वो कोई पर्सन उसके साथ कांटेक्ट में आ जाए, तो उसको, उस पर्सन को जो है ये हो सकता है, ठीक है। अब सिम्टम्स जनरली जो है इसका जो आपका इंक्यूबेशन पीरियड होता है वो टिपिकली 1 to 3 वीक्स होता है। मतलब सिम्टम्स आपके 1 से 3 हफ्ते बाद, कांटेक्ट होने के 1 से 3 हफ्ते के अंदर जो है वो अपेयर होने शुरू हो जाते हैं। और इस केस में जो है कुछ केसेस में डेथ भी हो जाती है। तो मल्टी ऑर्गन फेलियर से डेथ भी हो सकती है, डिहाइड्रेशन हो ज़्यादा हो जाती है, या फिर इवन ब्लीडिंग भी हो जाती है बॉडी के अंदर, ठीक है। तो उसकी वजह से जो है लोगों में डेथ भी हो जाती है। तो अब बेस्ट वे टू अवॉइड क्या है, कैसे इससे बचा जा सकता है? सबसे बेस्ट जो है इंपॉर्टेंट जो है एस्पेक्ट तो यही है कि आप रैट्स से बच के रहो। क्योंकि आप ऐसी हाइजीन करो अपने घर के कि आपके हाउस होल्ड आइटम्स में, जो खाने के आइटम्स में जो है फूड जो है वो रैट प्रूफ कंटेनर्स में रहें। और वो आप अपने जो है घर को रैट ट्रैप से जो है वो बचा, मतलब लगा कर रखो, ताकि रैट्स आपके घर पे ना आ पाएँ। तो नेक्स्ट टॉपिक हमारा है ग्रांट्स फॉर नॉन मिलियन प्लस सिटीज़। तो डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर जो है उन्होंने जो है 1154 करोड़ के आसपास की जो ग्रांट्स हैं वो 4 स्टेट्स को दी हैं, ताकि अर्बन लोकल बॉडीज़ में वो पैसा यूज़ किया जा सके। तो ये कौन सी स्टेट्स हैं? 4, आंध्र प्रदेश, बिहार, गुजरात और सिक्किम, ठीक है। तो ये ग्रांट्स जो है ये नॉन मिलियन प्लस सिटीज़ के लिए जो है वो दी गई हैं। तो अब नॉन मिलियन प्लस सिटीज़ जो है उसमें कैंटोनमेंट बोर्ड्स के लिए भी ये ग्रांट जो है वो उपलब्ध होगी। तो अब हम ये नॉन मिलियन प्लस सिटीज़ का कंसेप्ट कहाँ से आया है, इसको भी देखते हैं। तो 15th फाइनेंस कमीशन की कुछ रिकमेंडेशन हैं, उसी के बेसिस पर जो है ये ग्रांट्स जो है वो आप देख सकते हो, ठीक है। तो अब ये अर्बन लोकल बॉडीज़ को 15th फाइनेंस कमीशन ने 2 जो है कैटेगरीज में डिवाइड किया है। तो मिलियन प्लस, एक तो मिलियन प्लस एग्लोमरेशंस, अर्बन एग्लोमरेशंस, और एक आपकी लेस देन 1 मिलियन प्लस लेस देन 1 मिलियन पॉपुलेशन वाली एग्लोमरेशंस, अर्बन एग्लोमरेशंस, ठीक है। तो जो मिलियन प्लस अर्बन एग्लोमरेशंस हैं उसमें दिल्ली और श्रीनगर को एक्सक्लूड किया गया है। उनके लिए सेंट्रल गवर्नमेंट अपने अलग से जो है वो फंडिंग देगी, जो भी उनको ज़रूरत होगी। और जो है जो लेस देन 1 मिलियन पॉपुलेशन वाले जो टाउन्स हैं या सिटीज़ हैं, उनके लिए ये, उन्हीं को हम कहेंगे नॉन मिलियन प्लस सिटीज़, ठीक है। उनके लिए 2 तरह की ग्रांट्स हैं। एक तो है बेसिक ग्रांट, जो कि लोकेशन स्पेसिफिक नीड्स होंगी। जैसे अब समझ लो कि कोई छोटी सिटी है, कोई अर्बन एरिया, तो उसकी लोकेशन के मुताबिक जो उसको ज़रूरत है उस पैसे किसी समझ लो अगर कोई कोस्ट पे सिटी है तो उसको कोस्टल उसकी नीड्स के लिए उसको अलग से ग्रांट्स मिलेंगी, ठीक है। तो लोकेशन स्पेसिफिक फेल्ट नीड्स के हिसाब से वो बेसिक ग्रांट्स जो है वो मिलती है। दूसरा है टाइड ग्रांट्स। टाइड ग्रांट्स में क्या होता है कि जो बेसिक सर्विसेज हैं उनको मजबूत करने के लिए उस सिटी में या उस अर्बन एरिया में वो टाइड ग्रांट्स दी जाती हैं। तो इस टाइड ग्रांट्स में भी 2 कैटेगरीज हैं।
तो 50% फंड्स दिए जाते हैं कि सैनिटेशन और सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के अंदर जो है वो अर्बन जो एरिया है वो काम करेगा उस 50% ऑफ फंड से। बाकी का जो 50% ऑफ फंड है वो ड्रिंकिंग वाटर, रेन वाटर हार्वेस्टिंग और वाटर रिसाइकलिंग के लिए दिया जाता है। तो ये जो टाइड ग्रांट्स है वो आपके नॉन मिलियन प्लस सिटीज़ के लिए भी अप्रूव की गई हैं डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर द्वारा। तो डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर ऑफ कोर्स आपको पता होगा कि यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंडर आता है। तो उन्होंने ये 4 स्टेट्स के लिए ये टाइड ग्रांट्स को जो है वो अप्रूव किया है सैनिटेशन, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट और ड्रिंकिंग वाटर, रेन वाटर हार्वेस्टिंग एंड वाटर रिसाइकलिंग पर्पसेस के लिए। ठीक है, सो नाउ लेट अस सी ऑल दीज टॉपिक्स इन इंग्लिश. So the first topic is India's G20 presidency. So you know that India has assumed the president. India will be assuming the presidency of G20 for the first time in its history, and for the year 2023, India will be hosting the G20 summit. So India will become the president of G20 from 1st December 2022 to 30th November 2023, and this will be, of course, the first time India will be assuming this presidency. And to facilitate this presidency effectively, so like every other member country or who becomes the president of G20 does, India has also set up a G20 secretariat. So this is a practice, it is a normal practice. Every G20 president, any country who assumes the presidency of G20 has to form a G20 secretariat, so that all the G20 summit related work like knowledge sharing, content related, media, security, and other logistical aspects related to G20 summit can be handled. So India's Union Cabinet has recently approved this formation of a G20 secretariat. It will be, of course, manned by the officers and staff from Ministry of External Affairs, Finance, and other relevant ministries and departments, and even domain knowledge experts will be appointed there. So this secretariat will keep functioning till February 2024. Okay, that is 2 or 3 months after the conclusion of India's G20 summit of 2023. So there will also be an apex committee which will be headed by the prime minister, of course, and it will also see participation from several other council of ministers, like the minister of external affairs, finance minister, home minister, and even G20 Sherpa, who is currently the commerce minister of India. Okay, so this apex committee will provide the overall guidance to India's G20 presidency. Even a coordination committee will also be established to oversee the preparations of G20 in India, and it will also report to the apex committee, which is of course headed by the prime minister of India. So this G20 secretariat will enable long-term capacity building and knowledge, including knowledge and expertise. So it will basically map out all the areas that India needs to cover and India needs to focus upon during its presidency of G20. So about the G20, you know that it is the world's 20 leading industrialized and emerging economies international forum. So it consists of 19 countries, and European Union is represented as a separate entity in this G20 forum. Okay, so it was of course not founded in 2008. It was not founded in 2008, but it has been in operation since 1999. But during that period, only the central bank governors and finance ministers were meeting. Later on, the leaders started meeting with in the G20 summits after the 2008 financial crisis. Okay, so it is a forum for economic, financial, and political cooperation between the member countries. So the next topic is workshop on marine pollution. So Government of India, Government of Australia, and Government of Singapore have conducted this international workshop on combating marine pollution with a special focus on marine plastic debris. And during this workshop, world's leading experts, scientists, and government officials came together and shared their ideas as to how this problem of marine pollution can be addressed. So they also discussed research interventions which are required to monitor and assess the marine littering problem, and they even held some sessions like the
to discuss this problem, like what is the magnitude of this problem, how we can monitor it, and what research would be required to combat the plastic debris problem in the Indo-Pacific region, what are the best practices and technology which can be utilized, and what will be the solutions basically to prevent this plastic pollution. Okay, so these panel discussions also had some interactive breakout sessions, and it also encouraged discussions among the participants of the East Asia Summit countries. Why this East Asia Summit countries? Because we are talking about Indo-Pacific format, where this marine problem, the marine problems of Indo-Pacific region are being addressed through this workshop. So that's why East Asian Summit countries also participate in that. So what is the East Asia Summit? So you know that this concept of East Asia grouping was first mooted by the then Prime Minister of Malaysia, Mahathir bin Mohamad, in 1991. So, this summit was established in 2005, and it is the premier forum of Indo-Pacific region for a strategic dialogue. So it is the only leader-led forum in which all key partners meet to discuss political, security, and economic challenges which are faced by the Indo-Pacific region. Apart from, of course, the 10 Asian countries, it also has participation of India, China, Japan, South Korea, Australia, New Zealand, United States, and even Russia. Okay, so only ASEAN can lead this forum, and the chair position rotates between only the ASEAN member countries, and these eight countries like India, China, Japan, etc. They cannot be a part of. They cannot assume the chair position of. I'm sorry, East Asia Summit. Okay, so India is one of the founding members of this summit. So now let us see the next topic, which is Medaram Jatra 2022. So Union Ministry of Tribal Affairs has sanctioned 2.26 crore for the activities which will be planned for the Medaram Jatra of 2022. So this will be held this year between 16th to 19th February, and Union Ministry of Tribal Affairs has given funds for the promotion of Medaram tribal culture and heritage. So this yatra is conducted by the tribal community of tribal community Koyas of Telangana, and this is considered as the biggest tribal festival in Asia. It is, of course, the second largest gathering in India after Kumbh Mela. It is held biannually, that is twice a year, and it is conducted in the Jayashankar Bhupalpally district of Telangana. Okay, so this yatra is conducted to honor the twin goddesses Samaka and her daughter Saraka, who were the main protagonists who led the revolt of the tribal revolt of who led the tribal revolt against the levy of taxes on tribal people by the then Kakatiya rulers of 12th century. Okay, so during this jatra, a huge congregation comes to Medaram, and 50% of them are non-Adivasis. So this jatra is very famous, of the most popular tribal festival in India, and people from Madhya Pradesh, Odisha, Jharkhand, Chhattisgarh, and even Andhra Pradesh come to participate in this festival. Okay, so seeing this, the relevance and the extent of this festival, the state of Andhra Pradesh at that time, of course, Telangana was Andhra Pradesh, so they declared it as the state festival in the year 1996. So now let us see the next topic, which is Lassa fever. So one of the three people who were diagnosed with Lassa fever in UK have died recently. So these cases have been linked to the travel to West African countries. I'm sorry, and this Lassa fever is found in West Africa, and it was first discovered in 1969 in Lassa, that is in Nigeria, and it is considered to be spread by rats, which are primarily found in these countries of West Africa. Okay, these are the countries, Sierra Leone, Liberia, Guinea, and Nigeria. So in these countries, this Lassa fever has been declared already endemic. So this these a person can become infected
if the person gets into contact with the household items of food which have been contaminated by the urine or feces of an infected rat. And there is also person to person transmission in case the normal person gets into contact with a sick person's infected bodily fluids, or through the mucous membranes like eyes, nose, or mouth. Okay, so this person to person transmission is more common in healthcare settings. So the symptoms usually appear within 1 to 3 weeks after exposure. That is, the incubation period is 1 to 3 weeks. So once you get infected, and by the time you get the symptoms, that period is called the incubation period. Okay, so death can occur only within 2 weeks after the onset of the symptoms. So usually the death occurs due to the multi-organ failure. Okay, so the best way to avoid this disease is to avoid contact with rats. So just maintain hygiene and keep your food in rat-proof containers, and try to keep the rats away from your home by laying down rat traps. So the next topic is grants for non-million plus cities. So the Department of Expenditure, which is a part of Ministry of Finance, has released an amount of about 1154 crore rupees to 4 states for providing grants to urban local bodies. So these 4 states are Andhra Pradesh, Bihar, Gujarat, and Sikkim, and these grants are meant for non-million plus cities. Okay, so including of course the cantonment boards. So why this terminology of non-million plus cities has been used? So according to 15th Finance Commission, the urban local bodies have been divided into two categories. The first one is million plus cities, that is the million plus urban agglomerations. Of course, there are exceptions, Delhi and Srinagar, which are dealt separately. And the second one is less than 1 million population cities, which you can call non-million plus cities. So these non-million plus cities get grant from the central government in terms of basic grants and tied grants. So basic grants are meant for location specific needs, and tied grants are meant for strengthening of basic services in these cities. So tied grants have two components. 50% of the funds are earmarked for sanitation and solid waste management activities or infrastructure, and the rest of the 50% is tied to drinking water, rainwater harvesting, and water recycling projects. Okay, so these were our topics for today. We'll meet next time with new topics. Until then, goodbye and take care.